So hello everyone. At this class I am going to discuss the last part of probability, that is Bernoulli trials. Okay, this is the last part or the last topic of probability. So what do you mean by Bernoulli trials? पहले Bernoulli trials का definition पता होना चाहिए. Then Bernoulli trials का formula क्या है? Then Bernoulli trials related questions discuss करूँगा. Okay? So let us discuss first the definition of Bernoulli trials. What's the meaning and what is the use? When we have to use this Bernoulli trials, right? Okay. See, there are many experiments. There are many experiments which have only two outcomes. Outcomes means result. There are many experiments which have only two outcomes. As a tossed coin shows a head or a tail. Yes, we know एक coin में दो ही face होता है, head और tail. Okay, so मतलब दो outcomes हो सकता है, either head or tail. Okay, the response to a question, listen first. Okay, the response to a question might be yes or no etc. Of course, जब एक coin को toss किया जाएगा, so either head गिरने का चांस है और tail गिरने का चांस है. दोनों तो एक साथ नहीं आ सकता है, ठीक है? So the response to a question might be yes or no etc. तो suppose toss किया गया है coin, कोई बोला कि head गिरेगा, but लेकिन आया tail. So that is yes or no question ना? Okay. In such cases or in such experiments, we call one of the outcome as success. We call one of the outcome as success and the other one is failure. Okay, suppose coin toss किया गया, we are expecting head will come लेकिन गिरा tail, so that means what? It is a failure. Okay, so in such experiments or in such cases we call one of the outcome as success. अगर head गिरा तो that is success. अगर head expect किया लेकिन tail गिरा, that is failure. So one of the outcome as a success and the other one you have to consider as failure. Yes, अगर head गिरा तो वो success होगा, जो expect किया था वही मिला. अगर head expect किया लेकिन tail गिरा तो ये failure होगा. तो मतलब एक success होने से एक failure हो गई, क्योंकि दोनों we can't expect both head and tail at the same time, right? If you expect head and if head will come, then you can consider it as a success. But if you are expecting head but tail will come, then you have to consider it as a failure. Okay. So in each of such trial, the probability of success or failure remains constant. ठीक है? In each of such trial, the probability of success or failure remains constant. Suppose a coin is tossed, probability of getting head is 1/2. Suppose a coin is tossed, probability of getting tail is also 1/2. So in each such cases, probability of success or failure remains always constant. ठीक है? Suppose if you throw a die, let us consider a die. If you throw a die and you are expecting that even numbers will come, so probability of getting even numbers 3/6, that is 1/2. Probability of getting odd number is also 3/6, that is 1/2. Okay, so हमेशा constant ही होता है. Okay, such independent trials which have only two outcomes. Such independent trials means, for example, coin के बारे में बताया गया. Okay, such independent trials which have only two outcomes are called Bernoulli trials. ठीक है? जो एक्सपेरिमेंट में दो ही टाइप का आउटकम्स होता है, वैसा एक्सपेरिमेंट को Bernoulli trials बोला जाता है. Okay, like you can consider coin. Okay, next will come binomial distribution. जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या था, इसके पहले जो टॉपिक डिस्कस किया गया था,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल. सो यहाँ पे आएगा क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलरेडी बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट सबको है. वही जो बाइनोमियल में एक्सपांशन फॉर्मूला यूज किया गया था, दैट इज जनरल टर्म फॉर्मूला, वही फॉर्मूला को यहाँ पे फिर से यूज किया जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. The probability distribution of number of success in an experiment consisting n Bernoulli trials, वो उसका मीनिंग मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल दे दूंगा. ओके, the probability distribution of number of success in an experiment consisting n Bernoulli trials obtained by the binomial expansion p plus q whole thing to the power n. p और q लिया गया है यहाँ पे. जैसे बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था a plus b whole thing to the power n. what is that formula? a plus b, we know the general term formula is a plus b whole thing to the power n is ncr a to the power n minus r into b power r. यही तो था. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट किया जाएगा. ओके, सो consisting n Bernoulli trials obtained by the binomial expansion p plus q whole thing to the power n is called binomial distribution. Once again I am repeating, the probability distribution of number of success in an experiment consisting n number of Bernoulli trials obtained by the binomial expansion p plus q whole thing to the power n is called binomial distribution. Now what are p and q? Where p represent probability of success. बोला गया था Bernoulli trials में, जिसमें दो ही आउटकम्स होता है, that means एक सक्सेस एक फेल्यूर. वैसा टाइप का क्वेश्चन में Bernoulli trials और binomial distribution यूज किया जाता है. ठीक है, ओके. So P represent probability of success where Q represent probability of failure, and you have to remember that the summation of these two, that means P plus Q must be 1 ही होना चाहिए. because in यहाँ पे क्या बताया गया था, in such trial of probability of success or failure remains constant. That means the summation of success and failure must be 1. That's why if you toss a coin and if your probability of getting a head is 1 by 2, probability of getting a tail is also 1 by 2. So probability of getting head you can consider it as success. Probability of getting a tail if you consider it as failure, then half plus half is 1. Okay, so P plus Q must be 1. That means success plus failure, probability of success plus probability of failure is equal to always 1. Okay, so this is all about the definition of binomial distribution, and for this I have written the formula also जो मैं यहाँ पे लिखा था, because you should know, you have to use this formula. P plus Q whole thing to the power n, the expansion formula NCR, C for combination. N represent, what is n? You know the definition or the meaning of NCR. N means the total number of objects, and R means at a time how many objects we need to take. Yes, R represent how many objects we need to take at a time, and N means the total number of objects. Okay, and the expansion formula for P plus Q whole thing to the power n is NCR, P to the power R into Q to the power n minus R. बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा. P plus Q whole thing to the power n is equal to NCR P to the power R into Q to the power n minus R, where P is the probability of success and Q represent the probability of failure. Okay, like probability distribution, एक टेबल दिया गया था probability distribution में. So similarly in case of binomial distribution also you have to make a table. Same format है. In this distribution, in this means in binomial distribution, the number of success x can be written as, यहाँ पे success को x assume किया गया. ठीक है, the number of success x can be written as, जैसे probability distribution में लिखा गया था, x and p of x 0. first value if you consider it as 0, then 0 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सबको पता है. 0 का मतलब यहाँ, see, you have to use this formula only, and here I am using all this formula. Okay, so 0 का मतलब है when r is 0, that means
for example, if your coin is tossed twice, probability of getting head exactly twice, तो इसमें तो हमेशा दो हेड नहीं मिलेगा ना, एच 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 टी 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 एच, सो टी टी में तो कोई हेड नहीं आता है. सो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर x इज इक्वल टू 0, राइट? सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 दैट मींस x का वैल्यू 0 मतलब r का वैल्यू 0 है. यस, दैट मींस देयर इज नो हेड, देयर इज नो हेड. सो nc0 p to the power r, since r is 0, so that's why p to the power 0 into q to the power n minus r. So q to the power n minus 0 is n. So when x is 1, x equal to 1 का मतलब है r is equal to 1. So nc1 p to the power 1 into q to the power n minus 1. When r is 2, x का वैल्यू जो है वही यहाँ पे r का वैल्यू होगा. When x is equal to 2, nc2 p to the power 2 into q to the power n minus 2. And when r is equal to n, जब ये r का वैल्यू भी n होगा, then what will be the formula? ncn p to the power n into q to the power 0. Q to the power 0 is 1, that's why no need to write q. Okay, so this is the binomial distribution table, like probability distribution only, but you should know x, the values of x here represent the values of r, small letter r. Okay, so this is all about Bernoulli trials, binomial distribution and the expansion formula with the table. Okay, now I am going to discuss some numericals based on Bernoulli trials and binomial distribution. So now let us discuss some questions based on Bernoulli trials. Okay, क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे मतलब सोच सकते हैं कि ये Bernoulli trials based questions है. देखो, if a fair coin is tossed 10 times, 10 के जगह में 100 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, it doesn't matter. Okay, so if a fair coin is tossed 10 times, find the probability of exactly 6 heads. There are 3 parts of this question, so let us discuss first part only, exactly 6 heads. Okay, so since a fair coin is tossed 10 times, अगर एक बार टॉस किया गया, 2 बार टॉस किया गया तो ठीक है, लेकिन 10 टाइम्स टॉस किया गया है इसको. सो 10 टाइम्स टॉस किया गया, और जनरली इसमें यहाँ पे क्या पूछा, गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स. तो यहाँ पे मतलब टेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया. सो दैट मींस टेल्स यू हैव टू कंसीडर इज हैज फेल्यूर हियर, एंड द सक्सेस पार्ट इज हियर head, because here you are asked to find getting exactly 6 head. जो find out करना है that will be the success part. ठीक है, तो उसका रिवर्स जो ऑपोजिट जो होगा वो फेल्यूर होगा. एक कॉइन में 2 ही फेस होता है, हेड एंड टेल. Since you are asked to find the probability of getting exactly 6 heads, so you have to consider it as head is the success part, whereas tail is the failure part. Okay, now how to solve and how to write the data. Since a coin is tossed 10 times, so here n is equal to 10, because in binomial distribution we should know the value of n as well as the value of r also. So coin को जितना बार टॉस किया गया या डाई को जितना बार थ्रो किया गया वो होगा n का वैल्यू. ठीक है, तो इसीलिए तो बोला मैं 10 के जगह में 100 भी दे सकते हैं. So if here 100 is there, then you have to write n is equal to 100. Okay, if here 50 times is there, then you have to write n is equal to 50. Okay, so since here the coin is tossed 10 times, so n is equal to 10. Okay, what is the meaning of NCR? N means the total number of objects. So here the coin is tossed 10 times, so that's why we know the value of n. What is the meaning of R? R means at a time how many objects we need to take. Yes, so here the coin is tossed 10 times and you are asked to find the probability of getting exactly 6 heads. Getting exactly 6 heads, that means here R is equal to 6. Okay, exactly 6 heads पूछा, तो इसीलिए R का वैल्यू 10 टाइम्स टॉस किया गया, उसमें से getting exactly 6 heads का ही probability find out करना है. So that means at a time you need to take 6. So that's why R is equal to 6. Okay, so apart from n and r, then you have to find the values of p as well as q.
P represent probability of success. So since here the coin is tossed 10 times, it is not possible to write the sample space of 10 times. So एक बार टॉस करने से कितना होगा हेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. हमेशा एक बार के लिए ही लिखना है वैल्यू, ठीक है? So if a coin is tossed once, the probability of getting head is 1/2. This is success. Then Q is equal to, we all know, 1 minus P. That means 1 minus half. That means half only. And half plus half is 1 only. Yes. Since we know P plus Q is equal to 1, therefore, in order to find Q, we can write 1 minus P. Now, we likha 1 minus P. Okay. So Q is also half. Okay. So therefore, Roman 1. Probability of getting exactly 6 heads. Probability of getting exactly 6 heads. This is equal to NCR. N is here 10. C, R is 6. Okay. P to the power R. P is half to the power R. देखो सक्सेस को ही तो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, फेल्यूर को नहीं. तो सक्सेस यहाँ पे क्या है? गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स. तो P का वैल्यू हाफ मिला, मतलब एक बार टॉस करने से हाफ मिलेगा. तो गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स मतलब 6 टाइम्स टॉस करने से हाफ टू द पावर 6 ही तो होगा. सो हाफ टू द पावर 6 इनटू half to the power, that means Q is also half. So Q to the power क्या होता है? N minus R. So 10 minus 6, that is 4. If you want to check whether your answer is correct or not, you can check. कॉइन को कितना बार टॉस किया गया? 10 टाइम्स. तो सक्सेस अगर 6 है तो फेल्यूर मस्ट बी 4, बिकॉज 6 plus 4 should be 10 only. ओके. सो समेशन भी चेक करके देख सकते हो वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. मतलब यहां तक करेक्ट है कि नहीं. आंसर तो मतलब कैलकुलेशन करने से आंसर मिलेगा. सो आई विल नॉट कैलकुलेट दिस पार्ट. यू कैन चेक दैट. यू नो द फॉर्मूला एनसीआर. ओके. एक्सपांड इट एंड देन कैलकुलेट इट. सो कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वही होगा इसका आंसर, मतलब रोमन 1 का आंसर. ठीक है. नाउ रोमन 2. रोमन 2 में क्या पूछा गया? गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स. एटलीस्ट मीन्स व्हाट? एटलीस्ट मीन्स मिनिमम. यस, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम 6 हेड्स. तो मिनिमम 6 हेड्स है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? सिंस द कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, सो मैक्सिमम 10 हो सकता है. सो फॉर द सेकेंड केस यू हैव टू राइट लाइक दिस. प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 6 plus probability of x equal to 7 plus probability of x equal to 8 plus probability of x equal to 9 plus probability of x equal to 10. मतलब मिनिमम 6 हेड्स चाहिए तो मैक्सिमम 10 हो सकता है because the coin is tossed 10 times and whatever I have written here, x equal to 6, x equal to 7, these are nothing but the values of r. Yes. So for p of x equal to 6 मतलब ऑलरेडी तो यही निकाल दिया, तो यही पुट करना है. That is 10c6 half to the power 6 into half to the power 4. ये हो गया p of x equal to 6 का वैल्यू. Similarly, write the value of p of x equal to 7. 10c7 half to the power 7. X equal to 7 means getting 7 heads. तो गेटिंग 7 हेड्स तो हाफ टू दी पावर 7, तो इसमें हाफ टू दी पावर 3 हो जाएगा. इसका पावर देखने से ये ऑटोमेटिक बैठा सकते हो. 7 plus 3 10 होना चाहिए. सो फॉर p of x equal to 8, 10c8, ओके, हाफ टू दी पावर 8 into half to the power 2. Similarly for p of x equal to 9, 10c9 half to the power 9 into half to the power 1 plus for p of x equal to 10, 10c10 half to the power 10 into half to the power 0. Half to the power 10 means here all 10 are heads. So coin is tossed 10 times और 10 में से 10 ही heads है, तो there is no failure. So that's why half to the power 0. This part is the failure part. Okay. So ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, but it is very easy only. Take half to the power 10 ऐसा कुछ कॉमन लेके फिर सॉल्व करने से हो जाएगा. Okay. So calculation part it is up to you only. You just calculate it, हो जाएगा.
So similarly, if you know how to solve for at least 6 heads, so you should know for at most 6 heads. तो at most 6 heads के बारे में भी मैं बता देता हूँ अभी. So probability of at most. What is the meaning of at most? At most means maximum 6, not more than 6. Yes. So not more than 6. Roman 3. Not more than 6 में आएगा probability of x equal to 0. बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये x इक्वल टू 0 लिखना भूल जाता है, डायरेक्ट x इक्वल टू 1 से शुरू करता है. सो एटमोस्ट, इन केस ऑफ एटमोस्ट ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग द चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी मींस अनसर्टेनिटी. तो इसमें जो एक्सपेक्ट किया गया वो नहीं भी हो सकता है. तो यहाँ पे एटमोस्ट 6 हेड्स के बारे में बोला गया. वो कॉइन टॉस करने से क्या हमेशा हेड गिरेगा? टेल भी गिर सकता है. सो अगर टेल गिरा तो दैट मींस इट इज अ फेल्यूर. सो in case of atmost you have to consider the first value is 0. Don't start from x equal to 1. Okay, so x equal to 0, x equal to 1, x equal to 2, then for x equal to 3, x equal to 4 plus p of x equal to 5 plus p of x equal to 6. At most 6 heads means not more than 6. 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 6 से कम होगा. तो 6 से कम मतलब you have to start from x equal to 0. Okay, so here also x equal to 0 means this is the value of r. n is 10 only. 10c 0, p to the power 0. p means half. Half to the power 0 into half to the power 10. So अगर यहाँ पे हाफ टू दी पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो सक्सेस. तो इसीलिए तो 10 टाइम्स फेल्यूर है. हाफ टू दी पावर 10 इसलिए यहाँ पे आ गया. ऐसे कैलकुलेशन करने से पता चल जाता है. सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1 यू नो हाउ टू राइट. फॉर x इक्वल टू 1 10c1 हाफ टू दी पावर 1 इंटू हाफ टू दी पावर 9. 10c2 ये 1 का मतलब 1 सक्सेस. दैट मीन्स रिमेनिंग 9 पार्ट इज फेल्यूर. 2 मीन्स 2 सक्सेस. 2 success, that's why half to the power 2. So remaining 8 part will be failure. 10c3. 10c3 means only 3 times success. So remaining 7 times will be the failure. Plus 10c4. 4 times success means 6 times failure. 10c5 means 5 times success. Then 5 times failure. And for 10 p of x equal to 6 you can write 10c6 हाफ टू दी पावर 6 इंटू हाफ टू दी पावर 4. तो कैलकुलेशन करके जो आंसर मिलेगा वही होगा फाइनल आंसर. ओके, सो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व फॉर बर्नौलीज ट्रायल. ओके, ये सब बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चंस है. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया, वो भी 4 टाइम्स. कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स. तो मतलब यहाँ पे जो 4 टाइम्स टॉस किया गया पेयर ऑफ डाइस, सो दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ n. ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. सो यार n इज इक्वल टू 4. ओके, ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है. ब्रेक करके फिर उसका डाटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन पार्ट, वो सब लिखने से क्वेश्चन इजी हो जाता है. ठीक है. सो सिंस द पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट यार n इज 4. If getting a doublet is considered as a success. Last question में क्या success था? Getting 6 heads, getting at least 6 heads, getting at most 6 heads. तो last question में head जो है वो success था. और second question में क्या success part बताया गया? Getting a doublet. अच्छा, doublet क्यों? What is the meaning of doublet? A pair of dice is thrown, right? So pair of dice जब थ्रो किया जाता है तब doublet क्या क्या हो सकता है? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 and 6-6. These are called doublet. Okay? If a pair of dice is thrown, then the possible doublets are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the doublets. Okay. So if getting a doublet is considered as success, तो यहाँ पे जो doublet है उसको success part बताया गया. So how many doublets are there? 6 doublets. वो याद रखना है. Then find the probability of 2 successes. Find the probability of 2 successes. Pair of dice को कितना बार थ्रो किया गया? 4 times. और कितना सक्सेस चाहिए? 2 times. So that means
at a time we need 2 success, so here r is 2. Okay, so r is equal to 2, n is equal to 4. Now try to find the values of p and q, that means probability of success and probability of failure. So what will be the value of p? मैं क्या बोला था, ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैं बोला था, एक बार टॉस करने से जो वैल्यू मिलेगा सक्सेस का उसको कंसिडर करने से हो जाता है, बाकी 10 टाइम्स थ्रो किया गया या 100 टाइम्स थ्रो किया गया टू दी पावर वो लिखने से हो जाता है. तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू राइट द सैंपल स्पेस, बट इफ यू टेक it as one time, that means if you throw a pair of dice only once, then probability of getting a doublet will be 6 by 36, right? 6 doublets are there out of 36, so that means 1 by 6 होगा p का value. So if you know the value of p, you can easily calculate the value of q. q is equal to 1 minus p, that means 1 minus 1 by 6, that means 5 by 6. This is the value of q. So now we know probability of success, which is 1 by 6, probability of failure, which is 5 by 6, r is 2, n is 4. Now the required probability of 2 successes, that is NCR, p to the power, here p is 1 by 6, p to the power r, क्योंकि 2 ही सक्सेस पूछा गया, तो आउट ऑफ 4 अगर 2 सक्सेस है तो इसका मतलब बाकी 2 फेल्यूर होगा. तो फेल्यूर कितना है, दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू इज 5 by 6, 5 by 6 टू द पावर 2 होगा. 4 minus 2 is 2 only, so just calculate this value, will get the answer. Okay, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को लेकिन पढ़ के समझना है. बेस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, बर्नौली ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, इवन इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन, or like other like the first part, that is conditional probability based question. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमा फिरा के देगा तो इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए. ठीक है, some more models I will discuss, that will be in the next class. Okay, thank you for today.